Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So during the last trading session, we saw that there was a recovery in the market. Overall, the Nifty was up by 0.96%, and the close is about 19,200 at 19,230 levels. So there was a good amount of recovery during the week. Reality was the space, one space which has seen a very good amount of breakout. After that, oil and gas, PSU bank. So I think the market is looking good, positive on charts. So it has taken out the resistance zone of 19,100 level. I believe for this week there will be a continuation of the uptrend. Higher side 19,500, 19,600. 50-day moving average is likely to be retested during the week. So on the way down, 19,100, 90,000 is the immediate support. Only if 19,000 levels are broken down, then I think that what we were earlier talking of correction, that can be on cut. But right now, for the week specific, I think it will be a positive bias, and we'll be speaking of 19,600 on the higher side. Same coming to the bank nifty, the levels are 43,318. Earlier, what we had observed on 23rd October, there was a very sharp correction, and that correction took place when 43,500 level was broken down. So as long as the bank nifty doesn't scale above 43,500, there would be a slightly selling pressure close to this level. So even though when the Nifty we are having a very strong positive bias, then the bank Nifty I believe there will be a positive bias, but then the trigger will come only when 43,500 level is taken out. From the derivatives point of view, also there is a lot of call writing. One has to closely watch those levels. Above 43,500, we expect the short covering in the bank nifty, and above 43,500, bank nifty can move back to 44,000, 44,500. The expected trading range for the bank nifty is 43,000 to 44,500. So this is the 1,500 points range for the bank nifty. Bias for both the indices is positive, and we would suggest any correction during the intraday or intraweek should be viewed as a buying opportunity. Coming to sector specific, I think realty is one space which is given a very good breakout. So during the week, if there is any correction, stocks like Prestige, Godrej Properties, DLF, or Oberoi Realty. So these are the stocks which are in the uptrend. So any decline or some profit booking, and then we get a buying opportunity, we should take that opportunity, because the realty is one space. I think it will keep performing, and we have a very strong positive bias. In oil and gas space, I think ONGC and GAIL are the two stocks which, from the technically charts point of view, is looking good. So somebody is having a position and hold the long position. After that, PSU Bank is also one sector which is extremely looking positive. Bank of Baroda, SBI, and Canara Bank is looking positive on charts. So anybody who wants to take a position can keep a watch on that. Lastly, the FMCG in that Radico Khaitan and United Spirit, these are the two stocks which are looking positive on charts. So that can also be kept on the radar. Now, coming to the derivatives data, so there was a short covering in the Nifty futures to the tune of 2.86%. The put call ratio, the data has gained from 0.89 to 0.96 level. So this is slightly a strength. And the as on Friday, the call writing was seen at 19,300 and 19,400. So that will act as immediate resistance, whereas the put writing is seen at 19,200. So that will act as a support. Coming to Bank Nifty future, the Bank Nifty futures has seen a short covering to the tune of minus 5.64%. The put call data has also gained from 0.85 to 1.01 level. So this is extremely positive. Whenever the PCR data goes above the 1 ratio, it come into a bull kind of a territory. So this is a good sign. And the major writing for the call Bank Nifty was seen at 43,400. So that is the resistance, and 43,000 put options. So that will act as a support. Lastly, after a very long time, the FIs on the index future had gone long in the index position. They have slightly reduced their shorts by 13,000 contracts, even though overall they are short by 162, 1,62,692 contracts. The long short ratio is 18%. So the bias for the day as well as for the week is positive. Declines we will view as a buying opportunity. So that's a technical view. I hand over to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. So a couple of
update first. First is on Lemon Tree. So Lemon Tree has announced the signing up of a new key hotel that is in Telangana. And the property is expected to open by FY26 and shall be managed by the Carnation, which is a subsidiary company of Lemon Tree. Overall, I think if you look at, we believe LTH will benefit from the healthy demand in the leisure and pick up in a corporate travel, and demand supply mismatch is overall positive for the earnings growth of the Lemon Tree. So we have a buy rating with a target price of 110. Next, we have written a monthly update on chemical pricing, and overall the commentary which we gather from the number is like, the chemical the monthly decline in the monthly chemical prices, it has continued, though there was initially, like, in the month of September, October, we have seen a bit of uptick, but as China has opened its capacity, so again, like, weakness is seen. So in this environment, I think it will take some time before growth come back to China, and then only we can see a stability in prices going ahead. In this light, we understand, like, probably we'll have I mean, like, positive and buy rating on SRF and Naveen, which are on the robust fluorination prowess and a strong capex plan going ahead. Next is on SBI result. If you look at pretty strong set of numbers, I mean, PAT growth was up by 8%, and that's was led by lower provisions. ROA for the company has improved, and it stood at roughly, like, 1%. Going forward, management expect the names to remain stable at the current prices, at current rate, with a possible additional compression of 4 to 5 basis points to do deposit repricing. So all in all, in a PSU bank pack, I think SBI continue to remain a best bet. And I mean, like, numbers wise, again, it is showing that. Next, a couple of other results. CCL has reported numbers. Numbers were pretty weak, weak vis-a-vis what we were estimating. If you look at net profit growth, was almost like, roughly like 5% on Y&Y basis. That there is a interest cost jump is there, and plus there has been a weakness in the EBITDA margin. We'll be updating more post speaking with the management, but result has been negative. Relaxo also reported numbers. Numbers wise, if you look at, numbers were weak, what we were estimating. Though our healthy growth, which is there in Q2 it was there, and which has aided sales. But if you look at their NSR, which is the sales prices, so there has been a decline, and that has led to, like, I mean, like, kind of impact on its overall profitability. I mean, if you look at the result report that we have published, we have reduced our estimates for FY24 and 25. And on valuation front, again, like, the valuation, the stock is trading roughly like 65 times, which is quite expensive. Next is on, I mean, in terms of a couple of other results, like JSW Infrastructure reported number, pretty strong set of numbers. Revenue growth was 28% on Y&Y basis. Again, EBITDA margin expansion we have seen. And PAT growth is roughly 85% on Y&Y basis. So positive set of results from JSW. In terms of chemical, Sudarshan Chemical has reported number. I mean, like, the numbers were a little on the weaker side, what Street was estimating. Primarily, the concern has been on the margins front. And margin for the company was roughly 10% vis-a-vis Street expectation of roughly 11.5 to 12%. And that has led, like, vis-a-vis the reported numbers, the estimates were roughly like to do a 20 crore kind of PAT. They have reported 18 crores, so 10% lower than what the Street was estimating. Next things from my side is on EIH. So again, like, in hospitality space, we have seen a pretty strong set of movement numbers in terms of the PNL. Same thing is being reported by EIH. So revenue was up by 32% on Y&Y basis. EBITDA was strongly up as there has been improvement in EBITDA margin, and that has led company to report a PAT which is roughly like, almost 4x on Y&Y basis at around 94 odd crores. Last thing from my side on Infosys, again, like, we have seen is, like, there has been a cyber attack in one of its facility, and I mean, if you look at the subsidiary contribute around 1% of the company's annual profitability. We understand, like, this is more of a short-term phenomena and don't have a material long-term impact on the financials of Infosys. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand over to you. Thank you, Vishal sir, and good morning, everyone. So, starting with some further updates, first out of which is on Interglobe Aviation, where the country's largest airline on Friday said that there will be more grounding of aircraft due to
the issues in the fourth quarter and is taking a range of mitigating measures. Currently, around 40 planes of the airline are grounded due to the engine issues, according to a senior airline official. Indigo is taking various measures, including taking planes on the wet lease, retaining aircraft, and leasing additional planes from the secondary market. So, slightly cautious news from the company's point of view. Speaking of Bank of Baroda, the numbers were out where the company reported a net profit of rupees 4,252.9 crores, while there was a surge of 28.4% on a year-on-year basis. Overall, the bank's NII grew by 6.5% on a year-on-year basis as it came at rupees 10,830.70 crores. Speaking of L&T, the engineering and construction company on Friday announced that it was selling its entire stake in L&T Infrastructure Engineering Limited to focus more on its core business. The stake has been acquired by STUP Consultants Private Limited, which is a subsidiary of S System SA of France. It is an independent nuclear engineering group. Speaking of the results of IDFC First Bank, the bank has announced that its July to September quarter results, while it reported a decline of 51% in the net profit at rupees 21.65 crores as compared to rupees 44.56 crores on a year-on-year basis. The bank's revenue from operations in the second quarter was at rupees 33.17 crores, which registered a drop of 43% as compared to the year ago period. The finance agency offers financial and advisory services for the organizations in investment banking, infrastructure, and asset management. Speaking of Vedanta, the Vedanta Group is in advanced talks to raise $1.25 billion private loan with an interest rate between 18 to 20% as it seeks to overhaul its debt. The Indian conglomerate is nearing a deal after weeks of negotiations with lenders including Cerberus Capital Management LP, Davidson Kempner Capital Management, WAD Partners, and Aris SSD Capital Management Limited. The next update is on Adani Ports, where the company on Friday reported a 48% growth in the cargo handling at seaports that it operated in the month of October. Gautam Adani's firm handled about 37 million metric ton of total cargo in October, which was up by 48% on a year-on-year basis. Speaking of Zomato, the company reported a second consecutive quarter of profit with the company's food ordering and quick commerce business benefiting from the strong festive season spending. The company reported a net profit of 36 crores for the 3 months that ended on 30th September from a loss of rupees 251 crores on a year-on-year basis. It reported a 2 crore profit for the first time in the June quarter, while the revenue from operations grew by 71% to touch rupees 2,848 crores. Speaking of the numbers of JK Cement, net profit was up by 58.5% at rupees 178.1 crore, while revenue was up by 23.2%. Overall, the results were quite positive for JK Cements as well. Speaking of Affle India, the company's net profit was up by 13.2% at rupees 66.8 crores, while the revenue was up by 21.7% on a year-on-year basis. Again, the numbers looked quite positive. The next update is on Zydus Life, where the company has got a US FDA approval for Zituvimet, Zituvimet, which is a positive update for Zydus Life. Lastly, the numbers of JK Paper were out, where the net profit of the company was down by 6.5% at rupees 305.7 crores, while the revenue was up by 0.4% on a year-on-year basis. Overall, the numbers of JK Paper were slightly on the negative side. So this was all from my side. I'll now hand it over to Hitendra for further updates.
या थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में करने पे स्टार्ट करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन के साथ कंट्री ने कहा, जो इंडिगो ने कहा कि उनकी और सारी जो बहुत सारी एयरक्राफ्ट से वो ग्राउंडेड रहने वाली, क्योंकि इंजन इश्यूज के चलते करेंटली देखा जाता है 40 एयरप्लेन से जो कि ग्राउंडेड है। और इंडिगो बहुत सारे मेजर्स ले रहा है, जैसे वेट लीज में या उनके एयरक्राफ्ट को रिटेन करने के लिए, एडिशनल प्लेन्स को सेकेंडरी मार्केट से प्रोक्योर करने के लिए। सेकेंडरी बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे देखेंगे, नतीजे की नेट प्रॉफिट देखा 4,252 करोड़ का था। ये क्वार्टर में अगर जब देखा जाए तो 28% का राइज देखा गया वाई वाई बेसिस पे। क्रेडिट रोबस्ट था लोन ग्रोथ के चलते। पब्लिक सेक्टर का एनआई ग्रो हुआ गया है 6.5% से वाई वाई पे। और अगर हम देख रहे हैं तो 10,830 करोड़ का टोटल नेट आया था। एल&टी ने फ्राइडे को कहा कि वो एक अपना पूरा स्टेक बेच रहा है एल&टी इंफ्रा में, और वो फोकस करेंगे अपने कोर बिजनेस में। स्टेक जो है वो एक्वायर करेगा एसटीयूपी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है फ्रांस की इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ग्रुप की। आईडीएफसी बैंक के भी नतीजे देखे गए। ये नतीजे देखे तो उन्होंने रिपोर्ट किया 51% डिक्लाइन नेट प्रॉफिट में, जो कि 21.65 है, जबकि 44.56 का। कंपनी के रेवेन्यू ऑपरेशन देखिए सेकंड क्वार्टर में करंट इन्वेस्टमेंट 33 करोड़ का था, जो कि रजिस्टर ड्रॉप किया 43% का, जो कि 58 करोड़ के सामने था। फाइनेंस एजेंसी ऑफर एडवाइजरी के चलते ऑपरेशन के आईबी के सेगमेंट में और एसेट मैनेजमेंट है। वेदांता ग्रुप से एक एडवांस स्टॉक में, जो कि $1.25 बिलियन तक लोन प्राइवेट लोन लेंगे, जो कि 18 से 20% का इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, जो कि इनके डेट ओवरऑल के लिए रहेगा। इंडियन कॉन्ग्लोमरेट नहीं कहा गया है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम, जैसे सर्विस कैपिटल मैनेजमेंट, एलवी डेविडसन कैपिटल, वर्दे पार्टनर्स, एरएच एसएचजी कैपिटल मैनेजर, जो कि आ सकते हैं। पीपल फैमिली विद द सोर्सेज ने कहा है। अडानी पोर्ट्स ने कहा कि रिपोर्ट किया 48% कार्गो ग्रोथ, जो कि अक्टूबर मंथ के लिए था। और उन्होंने दिखाया 37 MMT टोटल कार्गो था अक्टूबर में, जो कि 48% राइज करते हुए दिखाई दिया। और वो कह रहे हफिया पोर्ट से जो कि इसराइल हैंडल करता है 1.1 MMT कार्गो, जो कि मार्जिनली बेटर है एवरेज कार्गो वॉल्यूम से, जो कि लास्ट 6 मंथ के। जोमेटो के भी नतीजे नतीजे अच्छे थे। देखा जाए तो नेट प्रॉफिट उन्होंने इस बार बढ़ के 36 करोड़ का देखा गया है, जो कि लास्ट टाइम देखा जाए तो 251 करोड़ का लॉस पोस्ट किए गए। और जो जोमेटो ने रिपोर्ट किया 2 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि फर्स्ट टाइम जून क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रो 71%, जो कि 2848 करोड़ के आसपास के। ठीक है, सब इन केपीआई के नतीजे थे कि नेट प्रॉफिट 58.5% का राइज हुआ है, जो कि 178 करोड़ 112 करोड़ के सामने। रेवेन्यू देखा जाए तो 23% से राइज हुआ, जो कि 2752 करोड़ से 2223 करोड़ के सामने। एफएल इंडिया के भी नतीजे देखे, जो कि 13% हाई थे, जो कि 67 करोड़ के सामने 59 करोड़ से। रेवेन्यू देखा जाए तो 22% हाई थे, जो कि 430 करोड़ के सामने 354 करोड़। जाइडस को एक यूएसएफडी अप्रूवल मिला है जेटोवम टैबलेट्स के लिए। नेक्स्ट है जेकी पेपर के भी नतीजे हम देख रहे हैं। प्रॉफिट डाउन हुआ 6.5% का, जो कि 306 करोड़ के आसपास, जबकि 327 करोड़ का है। रेवेन्यू देखा जाए तो मार्जिनली हायर है, जो कि 0.5%, जो कि 1650 करोड़, जो कि 1644 करोड़ का है। नेक्स्ट एलटीएच ने भी कहा इन्होंने की सिलेक्ट लेमेंट्री ऑर्डर, जो कि यदातिगता तेलंगाना में किया है, और एक्सपेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी को ओपन होने के लिए FY 26 के लिए, और उसका नेम चेंज करेंगे कार्नेशन होटल्स के लिए। एक देखा जाए तो 150 वेल अपॉइंटेड रूम्स है, जो कि कंटिन्यू रहेगा रिमेन पॉजिटिव सेगमेंट में डोमेस्टिक हॉस्पिटल में। हमें लगता है एलटीएच बेनिफिट करेगा हेल्दी डिमांड के चलते और लीजर ट्रैवल पिकअप होते हुए, कॉर्पोरेट ट्रैवल के चलते हुए। और डिमांड सप्लाई थोड़ी सी मैच होती दिख रही है नियर टर्म के लिए फेस्टिव सीजन के चलते, तो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ को बूस्ट मिलेगी इंडस्ट्रीज में। सेकंड, केमिकल की हमने मंथली प्राइसिंग अपडेट डिक्लेयर की है। इसमें देखा जाए तो केमिकल ने विटनेस किया सेकंड मंथ ऑन बेसिस में जो डाउन टर्न देखा गया था। मोस्ट ऑफ केमिकल प्राइसेस ने ट्रांजिट अपटिक देखा था सितंबर में, पर अक्टूबर में आते ही ये वापस से प्लांट शटडाउन्स और चाइना के 70 हॉलीडे के चलते यहाँ पे थोड़े से प्राइसेस सस्त होते हुए दिखे, थोड़े से नरमी दिखाते हुए दिखे गए। एक्सपोर्ट लेड डिमांड में भी थोड़ा सा हमें फीका पड़ी आते हुए देखा, क्योंकि लाइट ग्लोबल मैक्रोस के चलते और कंपनीज के पास ज़्यादा इन्वेंट्री के चलते, तो इमीडिएटली उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें लगता है एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन अपने फ्लोरिनेशन और स्ट्रॉन्ग केपेक्स प्लान के चलते आगे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एसबीआई के नतीजे देखिए, पैट देखा जाए 8% का ग्रोथ दिखा है वाई वाई, जो कि 13,256 करोड़ का है, जबकि 14,330 करोड़ का मेनली अकाउंट ऑफ रिडक्शन प्रोविजन के चलते, जो कि 96% डाउन हो गया वाई वाई के। और इंक्रीज एनआई में देखा जाए 12% का राइज देखा गया। ओवरऑल एडवांसेस देखा जाए तो 18% का आसपास, 13% के आसपास एडवांसेस देखे, जो कि 12% के हिसाब से था। और मार्जिन ट्वेंटी का निम्स में भी इम्प्रूवमेंट 12 हुआ, जो कि 3.17 है, जो कि करंटली 3.29 पे आ गई है। Guardian कम्युनिकेशन क्यू के साथ, जो कि इफेक्ट ऑफ डिपॉजिट रीप्रेसिंग के चलते और अदर एंड मार्जिन के चलते हुए ये देखा गया। आरओए में भी हमें डिक्लाइन होता हुआ देखा है 3 बिप्स का, जो कि वाई वाई बेसिस में 21 में क्यू पे जो कि स्टूड हुआ, जो कि खड़ा है 1.01 पे।
सीसीएल प्रोडक्ट से भी नतीजे हमारे बेहद नतीजे के निराशाजनक थे। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 20% का, जो कि 6,076 मिलियन का है, जबकि एबिटा देखा जाए तो 13% हायर है, जो कि 109 करोड़ के आसपास का। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 116 में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 18% के आसपास है, वीक प्रोडक्ट मिक्स के चलते। नेट प्रॉफिट में भी 5.3% है, जो कि 60 करोड़ के आसपास का। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखिए तो 1.5 टाइम्स हायर हुआ है, जो कि 18 करोड़ के आसपास। ये हम रिलीज नोट डिटेल करेंगे ऑन कॉल के बाद। लाक्स ऑफ फुटवेयर के भी नतीजे देखे। नतीजे हमारे पैरामीटर्स के चलते एवरेज रेशियो सबड्यूट देखा गया था, और ओवरऑल हम देख रहे हैं जो नेट सेल्स है वो 67% है थी, जो कि 715 करोड़ के आसपास गए। और एबिटा इंप्रूव हुआ 54% है, जो कि 91 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 44 करोड़ का, जो कि 97% हायर है। हमने हमारे एस्टिमेट्स को थोड़ा सा कट करके 3% के हिसाब से FY 24 के लिए, जो कि पहले 962 से घटा के 897 किया, 65 से अर्निंग्स के हिसाब से। चोलामंडलम के भी नतीजे देखे तो 42% हायर था YOY पे AUM ग्रोथ, और जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहे सारे सेगमेंट्स में। और 47% का डिसबर्समेंट देखा गया था, लेड बाय इसमें अक्रॉस सारे ग्रोथ सेगमेंट्स में देखा है। नेम्स में भी हमें 10 बेसिस पॉइंट्स से जंप आते हुए देखा, जो 7.4% के आसपास। एसेट क्वालिटी इंप्रूव है, जो DS3 जो बोलता है वो 3.6 से गिर के 2.96 पे आ गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो भी बेटर हो चुकी है। ग्रॉस NPA है वो 4.07 है, जो कि 4.3 के आसपास है, जो कि RBI के जो टारगेट है 6% के नीचे चल रहा है। NII ग्रोथ ग्रोथ देख रही है वो 10% है QOQ पे, जो कि लेड बाय इनकी NIMs के चलते। और पैट हमें 5% ग्रोथ होते थे क्वार्टर क्वार्टर, और प्रोविजंस दिख रहे हैं 7% के आसपास के। इन्फोसिस की जो US यूनिट है, इन्फोसिस मैकेमेशन, उन्होंने वो उनके इम्पैक्ट हुआ साइबर सिक्योरिटी इवेंट के चलते। और नॉन एबिलिटी जो कि कंट्रीब्यूट करती है 1% कंपनी के एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एबिलिटेशन रहेगा, बट एक बटन इम्पैक्ट मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स में। JSW इंफ्रा के भी नतीजे देखे। रेवेन्यू 28% आया था, जो कि 848 करोड़ का था, जो कि 662 करोड़ के सामने देखा है। बेटा 33% आया था, जो कि 452 करोड़ का है। मार्जिन अगर देख रहे हैं तो 53% आया था, जो कि 51% से 53% में। और नेट प्रॉफिट देख रहे हैं तो 85% आया, जो कि 256 करोड़ का है। So overall, that's it from mine. Thank you for letting the morning call. You may not disconnect.